Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel one time again. If you don't know me, my name is Najaf and welcome to my channel. If you're new here, so please subscribe to this channel and turn on that notification bell as well so you can get notified whenever I upload a brand new video. So yes, finally we are back और आज हम एक और सनस्क्रीन रिव्यू के साथ आए हैं, which is a very famous sunscreen, जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई हुई थी. I was testing this sunscreen from a quite long time, which is this one. This is the निर्वाणा बोटेनिक्स वालों का लाइट मॉइस्चराइजर यूवी डिफेंस सनस्क्रीन. सो यस, आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं and we will see whether it's a good sunscreen or it's a fail. ठीक है, so to see that verdict you have to watch the video till the end. Also I'll be trying this sunscreen like apply करके on my whole face अपने Instagram पे. So if you have not followed me on my other social media platforms, so please do that as well. I will just mention here as well and I will also mention in the description as well. ठीक है, and by the way video start करने से पहले just look at this amazing Taylor Swift hoodie. Look how cool this is, isn't it? Well, without wasting any time, let's start our review. So this product retails for 1250 rupees, and in 1250 rupees you are getting 50 ml of the product. So I will consider this price point on the more affordable side. This is a little bit more on the affordable side. It's not like 2000-2500 wali price point, which can be a bit expensive. So 1250 for 50 ml. If this is a good sunscreen, I will call this an affordable sunscreen. Okay, and you get this plastic, very cheap sticker plastic tube packing, extremely cheap packing. But I don't care about the packing, I care about the product. Okay, but just to let you know, it's not an extreme fancy packing. It just came in a white sleek bottle और इसका कोई भी बॉक्स वगैरह कुछ नहीं है. ये इसी तरीके से आपको रिसीव होती है. ठीक है. And by the way, this is a mineral sunscreen filter. It does not have any chemical sunscreen filter. This is a pure mineral sunscreen filter. And for the mineral filters, obviously इसमें दो ही mineral filter use हुए होंगे, which is zinc oxide and titanium dioxide. And I'm very happy to see कि उन्होंने filters की percentage भी mention की हुई है. So the zinc oxide has 6% and titanium dioxide has 6.4%. नाउ जब मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ रिव्यू दिस सनस्क्रीन, दे वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट कि इतनी परसेंटेज SPF 30 की रिक्वायरमेंट्स तक जाती ही नहीं. सो द आंसर इज यस, 80% SPF 30 की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं. इट्स जस्ट नॉट दिस ब्रांड, देयर आर मेनी अदर इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल. इफ यू लुक एट देयर मिनरल सनस्क्रीन फिल्टर एंड इफ दे आर ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर परसेंटेज, तो उसमें भी इतनी परसेंटेज ही यूज हुई है. सो येस, इट डू कंप्लीट्स इट्स रिक्वायरमेंट लाइक 6.4% ऑफ टाइटेनियम and 6% of zinc oxide do complete the requirement for SPF 30. Okay, so इसमें दो मिनरल फिल्टर यूज है. We all know about zinc oxide and titanium dioxide. They are the most safest sun filter available on the market and they are actually good. But इसका एक कहीं ना कहीं होता है, थोड़ा बहुत ही सन स्किन को ड्राई आउट कर देते हैं. But if the formula is well balanced, then ये इशू नहीं आता. But it tends to give you a more of a drying feel. I've noticed that personally. ठीक है, I've noticed that personally. I don't know if anyone else feels, but they are one of my top favorite sun filters because they're the most safest as well. Okay, so ये इसके sun filters के बारे में मैंने बात कर ली. Now we will talk about इसके inactive ingredients के बारे में. Inactive ingredients में इसमें आप लोगों को एलोवेरा लीफ जूस एक्सट्रैक्ट मिल जाता है. देन इस सन फिल्टर में आप लोगों को एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाता है. नाउ व्हाट बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज, दिस इज आल्सो बेसिकली एमोलियन भी है, ये एक हमैक्टन भी है. ये प्रोडक्ट को जो टेक्सचर होता है ना, नॉट द टेक्सचर, लाइक प्रोडक्ट का जो कलर होता है उसको बहुत मोर ऑन द वाइट कलर वाली साइड पे लेके जाता है, लाइक एक प्योर वाइट कलर वाली साइड. एंड इट ऑल्सो मेक्स द फॉर्मूला मोर नॉन ट्रांसपेरेंट. लाइक जो मिनरल फिल्टर्स होते हैं ना, उसको मोर नॉन ट्रांसपेरेंट करने के लिए दिस फिल्टर इज समवेयर यूज्ड. And this sun filter is also used to protect your skin from free radicals which is being produced from the oxygen. Oxygen कौन सी? Oxygen when your mineral filter titanium dioxide is exposed to the sunlight. ठीक है, तो उस टाइम पे जो free radicals produce होते हैं from the oxygen, ये आप लोगों को उससे भी कहीं ना कहीं protect करता है. So I really like to see this ingredient, especially in mineral sun filters. ठीक है, this is a good ingredient. देन इस सन फिल्टर में आप लोगों को शिया बटर में मिल जाता है. आई डिड नॉट फेल्ट शिया बटर वाली फील ऑब्वियसली. अब मैं आप लोगों को टेक्सचर चेक कराऊंगा, बट एक वो जो शिया बटर मेरे माइंड में आता है ना, वो थिक इमोलियंट लाइक प्रॉपर लाइक यू नो बटरी कंसिस्टेंसी, वो वाला शिया बटर. बट इसकी टेक्सचर वैसा नहीं है. आई विल शो यू द टेक्सचर एट द लास्ट. ठीक है, बट इसमें शिया बटर भी है फॉर ऑब्वियसली हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज. देन इस सनस्क्रीन में एक फिल्टर यूज हुआ है कैप्राइल हाइड्रोजामिक एसिड.
दिस इज अ काइंड ऑफ like a preservative, हेल्प्स इन कि प्रोडक्ट में थोड़ा सा फंगस वाली क्वालिटी ना आए, प्रोडक्ट खराब ना हो, ठीक है, फंगस ना लगे प्रोडक्ट पे, तो उसके तरीके से हेल्प करता है। यूजुअली आई सी दिस इंग्रेडिएंट मोर विद लाइक प्रोपेनाडायोल, ठीक है, एक इंग्रेडिएंट होता है उसके साथ। कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी यूज होते हैं इंग्रेडिएंट to create more of a preservative free preservative system. Usually you see this in cosmetics, also in skincare as well. Then इसमें आप लोगों को कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड भी मिल जाता है। ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन हाइड्रेशन, एंड आई रियली लाइक कि इन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि इट इज बीइंग डिराइव फ्रॉम कोकोनट ऑयल। देन इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हुआ हुआ है सेफ्लावर सीड ऑयल। डो नॉट कंफ्यूज सेफ्लावर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। डो नॉट कंफ्यूज बाय द नेम सेफ्लावर और सनफ्लावर, दे बोथ आर डिफरेंट। आई विल show your picture over here, ठीक है। Safflower is this kind of a flower, or sunflower is different. Obviously it's kind of an oil which is will be quite moisturizing and hydrating, ठीक है। This specific oil is very high in linoleic acid and also a little amounts of oleic acid as well. This oil do have some percentages of vitamin E as well, ठीक है, and surprisingly it does not irritate acne और oily prone skin वालों को ये सूट कर जाता है। Then इस सनस्क्रीन में आप लोगों को ग्लिसरीन भी मिल जाता है। Obviously we all know glycerin for its more hydrating and moisturizing property, a very cheap but a good effective ingredient. देन इस सनस्क्रीन में आप लोगों को एक इंग्रेडिएंट मिल जाता है ग्लिसराइल कैप्रिलेट, और इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हुआ है ग्लिसराइल स्टीरेट सिट्रेट, ठीक है। ये दोनों काइंड ऑफ लाइक अ सेम, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं। व्हाट दे एक्चुअली डू, दे एक्चुअली हेल्प टू मिक्स ऑयल एंड वाटर अच्छे से। ऑयल और जो वाटर की फॉर्मुलेशन होती है उसको अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज कि जो सिट्रेट वाला है इट हैज लाइक मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रिक एसिड इन इट, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, एंड दीज इंग्रेडिएंट्स आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एज वेल, एंड इट आल्सो हेल्प इन इमल्सिफाइंग द प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। देन इस सनस्क्रीन में आप लोगों को एक इंग्रेडिएंट मिल जाता है सनफ्लावर सीड ऑयल। नाउ दिस इज सनफ्लावर, और वो सैफ्लावर वाज डिफरेंट। नाउ ये वो सनफ्लावर सीड ऑयल है, ठीक है, विच यू नो वी ऑल आर वेरी अवेयर, वी ऑलमोस्ट सी दिस एवरी डे इन आवर किचन्स, ठीक है, जो कुकिंग ऑयल्स के तौर पे यूज होता है, ठीक है। सो वही सनफ्लावर इसमें भी यूज हुआ हुआ है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस व्हेन सनफ्लावर सीड ऑयल इज बीइंग यूज्ड इन स्किन केयर? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी really hydrating, really moisturizing, ठीक है, really nourishing. It's also really rich in fatty acids as well, ठीक है, and surprisingly this oil also do not irritates oily acne prone skin as well, especially जो acne prone skin होती है उनको ये oil से बहुत irritation होती है, but this specific oil does not irritate your skin like that, ठीक है, सूट कर जाता है at some point ये भी, और इसकी comedogenic rating है वो भी surprisingly 0 है, so that's a really great point, plus point as well. Then इसमें एक और oil used हुआ which is a bit problematic. Like I'm okay with all other oils as well, but this one I'm like, this is one of those essential oils. So this is lavender essential oil. Yes, it has that beautiful scent. Yes, it is do relaxing, calming. I do not mind a lavender essential oil in my body care, but on my skin care, on my face care, I usually tend to avoid these essential oils, any essential oil in general. Besides that, it do have some antibacterial properties, but it also contains linalool or linolyl acetate, and these ingredients do not suit acne prone skin, sensitive skin. You just name every skin and this ingredient will be problematic to every skin in my opinion, ठीक है। So I usually avoid essential oils in my skin care. Then इसमें आप लोगों को polyhydroxy stearic acid मिल जाता है। So ये ingredient क्या करता है, this ingredient helps to disperse the mineral sunscreen के जो filters होते हैं titanium dioxide and zinc oxide, it helps to disperse those ingredients properly well, ठीक है, जो उनके pigments होते हैं उनको अच्छे से disperse करने में help करता है, and it is also claimed to increase the absorption of these UV filters, ये आपकी स्किन में अच्छे से absorb हो जाए, जल्दी हो जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं help करता है, and it also helps to reduce some kind of white cast as well, जो mineral filters में होती है, it also helps to reduce that as well. Then इस सनस्क्रीन में आप लोगों को सॉर्बिटन ओलेट मिल जाता है, दिस ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स ऑयल एंड वाटर प्रॉपरली, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्पर्स मिनरल फिल्टर्स पार्टिकल्स इजीली, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आप लोग को विटामिन ई भी मिल जाता है, एंड दिस कंप्लीट्स आवर टोटल इंग्रेडिएंट लिस्ट, ठीक है। ओवरऑल आई एम नॉट मैड एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट इंग्रेडिएंट लिस्ट. नाउ लेट्स कम टू द टेक्सचर ऑफ द सनस्क्रीन एंड देन आई विल गिव माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस, ठीक है। सो look at this texture.
It's quite runny, creamier consistency. I hope you can see properly. This is the type of a consistency you are going to see. It's quite cloudy this type of a feel. मतलब it feels very nicer and smoother on skin. ठीक है? As you can see, it has quite nice emulsifying properties. अच्छे से emulsify हो जाता है ये product. It disperse really nicely because of the ingredients I've already discussed about before कि वो अच्छे से disperse pigment को disperse करने में help करते हैं. Because of glyceryl caprylic that also have some kind of emulsifying properties. So you are seeing that type of emulsion. ठीक है? But आप जब आप इसको पहले work करो तो you will be like कि यार ये blend नहीं हो रही. Why this not is blending? ठीक है, this product is not blending. I have like one hack you can say. I will suggest आप जब इस तरीके की sunscreen लगा लो, just let it set this type of sunscreens for a bit. ठीक है? This type of extremely hydrating moisturizing because it has lots of oil and as I told it has a lot of emulsifying ingredients as well. ठीक है? Or dispersing ingredients. So it will take some time. So I will suggest just let it sit on your skin for a bit. ठीक है? Let it dry. Why? Because the formula थोड़ा सा अपनी drying finish वाली side पे आएगा and when you will try to blend it like this, जब ये थोड़ी बहुत अपनी drying finish में आएगा, it will blend much more nicely. ठीक है? मतलब ये ज़्यादा जल्दी blend होगा. ठीक है? I took like three, I don't know what I should call them, squirts or जो मैंने drops लिए. I don't know how much product that will be. But as you can see, I'm using two of my fingers. ठीक है? As you can see, as you will blend this is going to be a bit more transparent formula. मतलब जिसका white cast है वो काफी हद तक कम होता जा रहा है. ठीक है? Now as you can see, there is white cast. ठीक है? There is white cast, but I have noticed after time this white cast is also gone. So I'm really curious. Look at the difference in both of my hands. This has a very slight bit of white cast, nothing too crazy. और ये भी कुछ टाइम बाद काफी ज़्यादा settle हो जाता है. And इसकी जो finish है, it's kind of a semi matte. I would say it's not completely matte. ठीक है? It's kind of like a semi matte finish. And as you can see, it looks beautiful on your skin. Let's look at this. So yeah, it looks and feels very beautiful on skin. It does not feel heavy and at all. But जो white cast है, I think it's really less for like 6% or 6.4% of titanium dioxide. I get कि इसमें काफ़ी ingredients इस type के which reduce the white cast. ठीक है? या इसमें काफ़ी oils हैं which make it more hydrating. ठीक है? ज़्यादा drying नहीं feel होती. ठीक है? But I'm still a bit concerned कि इसमें जो mineral filters हैं, are those nano mineral filters या दूसरे normal वाले filters. Please, if the brand is watching, do confirm us कि वो pure mineral filters है या they are nano filters, because they have not used any term sheer or something like this. ठीक है? They have just used the term light moisturize UV defense. अगर ये sheer term use की होती, so that's why I would say कि yes इसमें nano filters हैं, but इसमें sheer term वगैरह भी नहीं use हुई. So that's why I'm a bit curious. And after sometimes it feels matte. This is like pure matte. ठीक है? This is not hydrating. मतलब ये टिक जाती है, which I do like. I like staying sunscreen जो stay करती है. I do not like those type of sunscreen कि मैं बाहर जाऊँ and I'm like dripping. ठीक है? मुझे वो वाली sunscreen नहीं पसंद. I have extremely oily skin as well, so that's why I like something which stays on your skin. So this sunscreen do stays on your skin, but still, as I mentioned earlier, I am a bit concerned about the white cast. I think it's a bit less, and also I would suggest कि आप इस sunscreen के at least 2 layers लगाएं, because मुझे ऐसे feel होता है, I just feel like this कि as I am blending, I am making that protection even more less. ठीक है? I just felt like that, so that's why whenever I'm wearing this sunscreen, I like one layer, ठीक है? And then I go with a bit of another layer as well, especially on my cheek area as well, which the areas which I know are going to be exposed more to the sunlight. ठीक है? So yes, what are my final verdict on the sunscreen? So I do think this is a good sunscreen. I can see the effort of the Nirvana Botanics team behind this. I just wish कि वो जो essential oil है उसको निकाल के ऐसे करके फेंक दे, because इसकी जो स्मेल है, लेवेंडर ने कुछ खास फर्क नहीं डाला इसकी स्मेल में. या अगर तो लेवेंडर वाली जो सेंट है वो इसको कुछ बेटर कर सकती. ये रिमाइंड्स मी ऑफ ना स्कूल इंक नहीं होती, प्योर 110% इट्स स्कूल इंक वाली फ्रेग्रेंस. ठीक है? जो इंक हम यूज़ करते हैं पेन्स में, डॉलर की, आप एक दफ़ा उसको स्मेल करना,
and sniff this sunscreen. ठीक है, it's totally the same fragrance in my opinion. So yes, lavender ने कुछ fragrance में तो कुछ किया नहीं, so please next time please exclude that lavender. We do not need that in this sunscreen. Overall वैसे अगर देखा जाए, yes, this is a quite moisturizing formula. It stays on your skin. I can see dry skin वाले लोग पसंद करें sunscreen को, but this does not have a glowy finish. As you can see, it has like a mattifying finish, but not extreme mattifying finish. It has some kind of like a demi matte finish, I would say, but this is not प्योर मैट, ठीक है, बिकॉज ये जैसे अप्लाई होती है एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग और अच्छे से एमल्सिफाई होकर डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है. सो आई कैन सी ड्राई स्किन वाले लोग इसको यूज़ करते हुए, बिकॉज इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम. इट हैज़ दैट ऑयल्स एज वेल विच हाइड्रेट्स एज वेल, एंड आई कैन ऑल्सो यूज सी ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन वाले लोग इसको यूज़ करते हुए, ठीक है. अब आई डोंट नो इसमें लेवेंडर की कितनी वो परसेंटेज यूज हुई है, बट इट फील्स इसमें काफ़ी लेस यूज हुई है. सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद सेंसिटिव पीपल ऑल्सो यूजिंग दिस सनस्क्रीन. सो येस, आई डू लाइक दिस सनस्क्रीन एंड आई विल रिकमेंड दिस सनस्क्रीन. बस एक ही डाउट है कि use a bit more of the sunscreen. या निर्वाणा वाली टीम एक और काम भी कर सकते हैं. They can just increase this जो सनस्क्रीन की जो परसेंटेज है ना, एक को 9% कर दें और एक को 7% कर दें, ठीक है, दोनों फिल्टर्स को, एंड मेक इट टू SPF 50. ऑलमोस्ट दैट थिंग दैट विल मेक इट SPF 50, ठीक है. They can just do like 9-10% तक इसकी सन फिल्टर की करके यू कैन मेक इट टू SPF 50, ठीक है, for more a bit more protection, ठीक है. We will not mind a bit more white cast, ठीक है. This is like no white cast, ठीक है, in my opinion. So yes guys, I think that's it for this review. I hope you guys like this review. अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, किसी चीज़ की कंफ्यूजन है, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है. ऑल्सो विंटर सीरीज भी आ रही है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. So your request है आप लोगों की, just let me know in the comments down below, ठीक है. I will also review those products as well. I hope as always आप लोगों को review पसंद आया होगा. If you did so, please like this video and turn on that notification bell as well, so you can get notified whenever I upload a brand new video. Thank you so much for watching. Also do not forget me to follow my other social media platforms, ठीक है. Thank you so much for watching this video. अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा. Take care. Love is bye bye.